the recording again. Okay, Baljeet provided the following information: opening and closing inventory, cost of sales, admin expenses, selling expenses, capital employed, and markup 25%. Markup is upon cost of sales, in which the equation is sales is equal to cost plus GP. Markup may cost is 100%. If it is GP is 25%, तो sales will be 125%. ठीक है? Alright. तो चलो जी यही equation हम यहाँ कर लेते हैं. Sales is equal to cost of sales plus GP. Since it is markup, the cost of sales will be 100%. This is 25%. The sales will be 125%. Margin होता है तो margin के अंदर क्या होता है? Sales 100% होती है. ठीक है? Cost of sales is given, which is 90,000. ठीक है? तो अब बताएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी. सो ये कैसे आएगी? 90,000 into 125 upon 100. So what value? 90,000 into 125 divided by 100. 25%. I think this is 112,500 if I'm not wrong. Is it? Sir, just 1 minute. And this must be 22,500. Please check the values. Okay. Purchases again. Opening inventory plus purchases minus closing Sir, the values are fine. is equal to cost of sales. Cost of sales is 90,000. Opening inventory and closing inventory is Mustafa. Please जरा calculator लेके बैठो. 14841 plus purchases minus closing inventory is 21159. Is this? So what will be the value of purchases? Sir, 96,318. जब ये यहाँ जाएगा ऐड होगा, जब ये यहाँ जाएगा तो लेस होगा. ठीक है, तो कितना? 96,000 318. that is the value for purchases. उसके बाद GP minus expenses is equal to net profit. GP we knew it is 22,500. कहाँ से निकाला? फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया था हमने. इसके बाद within the expenses you have admin expense and selling expense. ठीक है. Expenses में okay minus 490 plus 745. दोनों expenses हो गए. It's equal to net profit. तो net profit कितना हुआ भाई? ये दोनों expenses minus कर लो इसमें से. You'll get the value for net profit. What is the value for net profit? What is the value for net profit? Guys, you should Sir, just 1 minute. सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए टेक्निकली. Sir, 1 minute निकाल रहा हूँ. Okay. Sir, 10,125.
10125. Okay, now you have to calculate GP margin, which is GP upon sales times 100. Okay, which is 22,500 upon 112,500 times 100. So this would be 20%. Net profit margin 10125 upon 112,500. Please, is there a percentage check करना जरा GP margin की times 100. What is this value? This one, what would this be? Rate of inventory turnover is Sir, वो net profit to sales is 9%, and the first value gross profit margin is fine. It's 20%. alright. Cost of sale upon average inventory. Cost of sale was 90,000. Average inventory थी तुम्हारे पास 14841. That is opening 14841, and the closing inventory was 21159. 21159 divided by 2. तो पहले 8 एवरेज इन्वेंट्री निकलेगी, फिर कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड होगा, तो ये रेट आएगा. उसके Sir, बाद 5. कितना 5. एग्जैक्टली जी sir. 5 times. Alright. Rate of inventory turnover, rate of capital employed, net profit upon capital employed times 100. So net profit is 10125 upon capital employed was mentioned in the question, which is 101,250. 101 times 100. ठीक है, तो this would be 10%. ठीक है. Give 2 comments on the performance of the business. ठीक है. ठीक है जी, परफॉर्मेंस के ऊपर कमेंट देने. सबसे पहले तो आपका जीपी मार्जिन कम हुआ है, सही है. अच्छा, नाउ if you see the performance indicator over here, जब आपका जीपी मार्जिन कम होता है ना, तो आप सोचते हो कि यार अच्छा चलो ठीक है, priorities for this, या तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट या कॉस्ट यूनिट पे इफेक्ट आया ना. ठीक है. अब जब जीपी मार्जिन कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो या तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम हुई है या कॉस्ट पर यूनिट बढ़ी है. ठीक है. अच्छा जी, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम की है आपने, तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ना चाहिए था. क्यों? व्हेन यू डिक्रीज प्राइसेस यू शुड हैव सोल्ड मोर इन्वेंट्री. रिलेशनशिप नजर आ गया. ठीक है, कि व्हेन यू डिक्रीज द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट यू शुड बी सेलिंग मोर, बट यहां तो कुछ और हो रहा है. सेलिंग प्राइस इंक्रीज अगर हो रही है तो इन्वेंट्री टर्नओवर भी कम हो रहा है. ठीक है. तो प्रॉब्ली जब आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी और उसका इन्वेंट्री टर्नओवर से एक्चुअली कोई रिलेशनशिप नहीं है कि कॉस्ट बढ़ रही है तो, लेकिन अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस भी उसी प्रोपोर्शन पे बढ़ा रहे हैं तो आपका जीपी मार्जिन भी सेम आना चाहिए था.
तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट वाला पॉइंट तो हमारा यहाँ बनता नहीं है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो सकता है कम हुई हो, ठीक है। इसका रेप्लिकेशन यहाँ आना चाहिए था कि ज्यादा इन्वेंट्री सेल होनी चाहिए थी। प्रॉब्ली यहाँ पे क्या सिचुएशन हुई है कि जी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ी है, ठीक है, सही है, कॉस्ट पर यूनिट बढ़ी है। एंड और उसके अलावा हमारे पास एक और इशू भी है, दैट इज लेस यूनिट सोल्ड। जब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कम होते हैं, व्हेन दे आर लेस यूनिट सोल्ड, तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम होता है। When you have less units sold, net profit margin also decreases. Why? Because आपने इतने यूनिट्स ही नहीं बेचे होते कि जिनका प्रॉफिट आपके प्रॉफिट्स को, बाकी प्रॉफिट्स को मैनेज कर सके। So that is also the case over here. This is also the case. और फिर आपका नेट प्रॉफिट ओवरऑल, जब आपको नेट प्रॉफिट वैल्यू कम होती है तो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होता है, ठीक है। सो हमने एक रेशियो से सारी चीजें ड्राइव की, सारी इसकी स्टैटिस्टिक्स ड्राइव की। कैसे ड्राइव की? The first thing we did, we took this ratio and this has decreased, सही है। तो अगर ये डिक्रीज हुआ है, देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, या तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कम हुई है, लेकिन इसकी वजह से इन्वेंट्री टर्नओवर बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है द ओनली अदर दिस इज द इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। विद द इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, जनरली क्या होता है कि जी अगर आपने कॉस्ट पर यूनिट आपकी बढ़ गई है आपकी, और तो उसकी वजह से आपके प्रोडक्शन को अपना प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो जाता है, ठीक है। और एक और मसला मुझे यहाँ ये लग रहा है कि जी इन्वेंट्री टर्नओवर कम हुआ है, दैट मीन्स यू हैव सोल्ड लेस यूनिट्स एज वेल, दैट इज फॉर श्योर। जब आपकी क्वांटिटी ऑफ सेल्स कम होती है तो आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ दो चीजों से अफेक्ट होता है, ठीक है। लेट मी जस्ट राइट देम फॉर योर रेफरेंसेस, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ सेल्स से और एक्सपेंसेस कंट्रोल से, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि जी क्वांटिटी ऑफ सेल्स जब कम हुई है, विच इज ऑब्वियस ओवर हियर, तो आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, ठीक है। और जब आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो डेफिनेटली आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होगा। सो दिस इज व्हाट इट शुड बी। नाउ कमिंग ऑन द परफॉर्मेंस, एंड देयर 6 मार्क्स ना, ठीक है। नाउ लेट मी जस्ट राइट इट डाउन एंड आई विल टेल यू कि मैंने 6 मार्क्स कैसे गेन किए इसके अंदर, ठीक है। जीपी margin decreased from 25% to 20%, ठीक है। This may be due to an increase in cost per unit as due to inflation or limited supply of material, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा rate of inventory turnover also decreased from 8 times to 5 times, that is less units are sold during the
ईयर। ठीक है, अब इसमें मैंने मार्क्स कैसे गेन किए, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा जीपी मार्जिन डिक्रीज फ्रॉम 25% to 20%, दिस इज 1 mark. This may be due to an increase in cost per unit due to inflation or limited supply of material. This is like इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट में मुझे 1 mark मिल जाता, लेकिन मैं इसके फर्दर जस्टिफिकेशन खुद से दी है। ठीक है, मैं नहीं देता, ठीक है, लेकिन जब मैं ये दे रहा हूँ तो आई एम एक्चुअली टेलिंग एग्जामिनर कि मेरे कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं। सही है। उसके अलावा रेट ऑफ इन्वेंटरी टर्नओवर आल्सो डिक्रीज फ्रॉम 8 टाइम्स टू 5 टाइम्स, इस पे भी 1 mark होता है। That is less units are sold during the year. You are just explaining the ratio. ठीक है, ओके। तो टेक्निकली इस पे वैसे 3 marks अलॉटेड हैं, तो 3 marks मुझे कहाँ मिलेंगे, 1, सही है, 2, और इस पे 3 मिल जाएगा। वरना मेरे पास पॉसिबिलिटी और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी और है। आगे पीछे कुछ करूंगा तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन हो जाए। ओके जी, नाउ द सेकंड पार्ट, since less units are sold, net profit margin also decreased from 11% to 9%. ठीक है, the fall in net profit value due to less units sold also caused ROCE to decrease from 12% to 10%. ठीक है, ठीक है जी। Now, in this one, net profit margin also decreased from this to this. ठीक है, the fall in net profit margin value due to less units sold, ठीक है, also caused ROCE to decrease from 12% to 10%. अब इसने कमेंट्स मांगे थे, एडवाइस नहीं मांगी थी। एडवाइस मांगता तो मैं इसमें एडवाइस देता, इसको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, अब यहाँ एडवाइस मांग रहा हूँ, सजेस्ट 3 एक्शंस फॉर इंक्रीज इन्वेंटरी टर्नओवर, और लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था। डिस्काउंट्स, promotions, uh, customer loyalty cards, ठीक है, after sales service, warranty and maintenance, ठीक है, and the third point would be allow longer credit period, allow longer credit period to customer, allow longer credit period to customer। ठीक है, these are 3 reasons जिससे आप अपनी इन्वेंटरी टर्नओवर को इंक्रीज कर सकते हैं। सही है जी। सो यस, आई थिंक दैट इज इट। फिर अब ये वेंचर आ गया, इसका वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालना है। काफी टाइम हुआ करंट रेशियो और कोई एसेट रेशियो निकाला, तो लेट्स जस्ट लुक एट दिस वन क्विकली।
This is your current asset. This is your current asset. Inventory is your current asset. Okay. Other payables, current liability. Other receivables, current asset. Trade payables, current liability. Trade receivables, current assets. So yeah. So working capital ratio is very simple. Current assets upon current liabilities. So yeah. So 1750 plus 250 plus 20,000 plus 1400 plus 16,600. These are the value of your current assets. Upon current liability is 6860 plus 12140. And the ratio is expressed as answer is to 1. ठीक है. अच्छा जी मुझे पता था क्विक रेशियो मांगेगा ये. I'm calculating it over here. Asset test ratio. I would not take inventory in this. Inventory is 20,000. ये नहीं लूंगा इसके अंदर बाकी सारी चीजें आएंगी. Current asset minus inventory upon current liability. So either I should write the total of current assets and subtract inventory, or I should take current assets without inventory. It's the same thing. So 1750 plus 250 plus 1400 plus 16,600. ठीक है. Upon 6860 plus 12140. So yeah. So current assets without inventory. This is current assets without inventory. The same thing. Total of current assets minus inventory or current assets without inventory. It's the same thing. So working capital ratio and asset test ratio calculate हो जाएंगे. All right, and after that, okay. Once we have the ratios, तो फिर हम उसको comment कर सकते हैं. आपस में, ठीक है? Sir, do you want me to tell you the ratios? हाँ मुझे बताओ जरा. Sir, working capital ratio is 2.11 ratio 1, हम्म. and just 1 minute. And the asset test ratio is 1.15 ratio 1. 1.15 ratio 1. ठीक है जी. So 2.11 and 1.15. Sorry, sir, 1.05, not 1.15. तो 1.05. ठीक है जी. All right. So yes. Comment on the change in ratios. ठीक है. Comment on the change in ratios. 2 marks का comment करना है तो आप बता दीजिए. Working capital ratio decrease from 4:1 to 2.11:1, and asset test ratio decrease from 2:1 to 1.05:1. ठीक है. The liquidity in the business has decreased. ठीक है. अगर आप भी लास्ट कमेंट नहीं भी लिखते हैं तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं. ऑलवेज व्हेन यू आर राइटिंग कमेंट्स फॉर रेशियोज डू मेंशन कि जी ये रेशियो डिक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, देयर इज अ मार्क फॉर इट. ठीक है. 3 पॉसिबिलिटीज. ठीक है. 3 possible causes for any changes that have taken place. Now these ratios are falling. सही है. तो आप इसकी पहली पॉसिबिलिटी क्या कर ले सकते हैं कि नंबर 1 4:1 से 2:1 हो गया. दैट मीन्स सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ आपकी कुछ ना कुछ करंट एसेट्स कम हुए. ठीक है. 3 पॉसिबल कॉजेस कुड बी परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट फ्रॉम करंट एसेट्स. ठीक है. आपने अगर करंट एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू नॉन करंट एसेट्स
तो पहले करंट एसेट्स 4:1 थे, अब वो 2:1 हो गए. दैट मीन्स कुछ नॉन करंट एसेट्स कन्वर्ट हो गए into नॉन करंट एसेट्स. दैट इज ऑल्सो one possibility. The other possibility is basically example machines and motor vehicle or furniture. ठीक है. दूसरी example could be owners withdrawals from the business by means of cash और बैंक और इन्वेंट्री. ठीक है. अब जब ओनर ने निकाल लिए बिजनेस से पैसे, तो या तो कैश निकालोगे या बैंक निकालोगे, तो डेफिनेटली से आपके करंट एसेट्स कम है. ठीक है. ओके. एंड द थर्ड पॉसिबल रीजन फॉर दिस इज बेसिकली कि देखो हमने दोनों रीजन में ये बताया है कि हमारे करंट एसेट्स क्यों कम है. अब हम एक रीजन में ये बता सकते हैं कि हमारी करंट लायबिलिटी भी तो बढ़ सकती है. कैसे बढ़ सकती है? ठीक है. कन्वर्जन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन short term loan conversion of long term loan into short term loan as it is payable within next 1 year. ठीक है. long term liability, you had a long term liability, सही है. that means loan 5 years के लिए था, तो 4 years have passed by, अब वो क्या बन गया, इस साल करंट लायबिलिटी में आ गया. ठीक है. बिकॉज आपने इस साल उसको पे करना है. is payable within the next 1 year, तो that means long term loan आपकी current liability के अंदर आ गया. ठीक है. जिसके से अभी current liability increase होगी, जिसके से आपको working capital ratio decrease हो गया. Alright, so that is it with the ratio का question.